In writing section, I would first share the syllabus. We'll see how much is there and how much has been removed. Then we'll decide what should be done. कहाँ इंग्लिश? See, this is grammar section, and there are two things, determiners and tenses, which we have already seen. Type of questions they will ask: multiple choice questions on gap filling, multiple choice questions on reordering or transformation of sentences. ठीक है. Literature, writing. If you need, you can note it down, beta, because every time it will be difficult to open the syllabus and find out what to do. See, in writing section, second question, that is first question of writing section, is notice writing, 50 words, 3 marks. It can be noted down. One is notice writing, word limit is 50 words, and it carries 3 marks. Then second thing is poster. Again, word limit is 50 and 3 marks. So 2 questions of short writing task, 3 marks each, notice and poster. Okay. Then next question is letters based on verbal visual input to be answered in 120 to 150 words. Word limit note कर लेना बेटा. Letter writing is there. Types of letters कौन कौन से हैं आपके लिए देख लो. Business और official letters. तो business और official letters में क्या क्या है? For making inquiries. Perhaps I asked this one in the exam na recently. We had half yearly exam and this was given. Yes, sir. Letter of Yes, inquiry. sir. है ना? Yes. So you can note it down. Letter of inquiry, then registering complaints and asking for and giving information, placing orders and sending replies. उसके बाद letter to the school or college authorities regarding admissions, school issues, requirements, suitability of courses, etc. 1 out of 2 given questions to be answered in 5 marks. It carries 5 marks. Next is 120 to 150 words, डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव. तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया स्पीच, आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया डिबेट. स्पीच और डिबेट ये भी दिया था मैंने आपको. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, डिबेट दिया था ना. ठीक है. तो कुछ लेटर्स हैं और स्पीच है और डिबेट है. इसके अलावा शॉर्ट राइटिंग टास्क में नोटिस है और पोस्टर है. दैट्स इट. अब ये इतने सारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो जनरली, नॉट जनरली, एवरी टाइम वी यूज टू डू. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर बहुत सारे होते थे, 10-11 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स थे, लेकिन क्योंकि इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है,
फिर लेटर टू एडिटर जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, दैट ऑल्सो हैज बीन रिमूव्ड. एप्लीकेशन फॉर जॉब with a biodata or resume removed. Article writing, report writing removed, and narrative writing removed. Grammar में models, clauses, change of voices, error correction, editing task, ये सब removed है. ठीक है, तो बहुत कम चीजें अब हमारे पास बची हैं करने के लिए. नोट कर लिया ये क्या क्या करना है? जब मैं पूछूं तो बताते जाना. ओके, बिकॉज आई विल Yes, sir. फॉरगेट. स्पेशली ये जो लेटर्स हैं, तो लेटर्स में टाइप्स ऑफ लेटर्स जो जो इन्होंने बताए हैं वो सारे आप एक बार नोट करके रखना. अब अभी तक नोटिस और पोस्टर जो था, इट कैरीड 4 मार्क्स. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, इट कैरीज 3 मार्क्स. तो ये तो हमारे पास पुराना सब कुछ रखा हुआ है स्टफ. मार्क्स को आप छोड़ दो, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो नहीं है हम उनको ड्रॉप कर देंगे. ओके, Yes, sir. तो द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज दैट? नोटिस राइटिंग, Notice. है ना? एंड यू हैव बीन डूइंग नोटिस फॉर पास्ट, if I'm not wrong, at least 5 years. You must have started writing notice in class 6th. Have you? हाँ? तब से लिख रहे हो और अभी भी यही करना है. और अगर उसके बाद भी हमें इसमें फुल मार्क्स नहीं मिल पाए तो गलती नोटिस की है, हमारी नहीं है. है ना? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, जस्ट गो थ्रू देम. इफ यू फाइंड समथिंग यूजफुल वर्थ नोटिंग डाउन, नोट डाउन. कैन समवन रीड? Yes, sir. प्लीज गो अहेड. First, formal and simple language. Second, only relevant information. Third, follow the format given. Fourth, no addressing dear students or friends, etc. Fifth, no thanking you, yours sincerely, etc. Sixth, name of school, organization, and place should be mentioned. Seventh, notice in capital letters. Eighth, give an appropriate heading. Ninth, avoid this is to inform you that. 10th, beginning can be our school is organizing a blood donation camp, cultural program. The school is going to organize. Our school is conducting an allocation competition. Captions and prefix are requested to attend a meeting. 11th, give details on date, time, venue. 12th, for future details, contact. For more details, please feel free to contact the undersigned. For further queries, do not hesitate to contact. 13, sign authorities name and then designation. 14, put the notice in a box. एक और है. 15, neat presentation is all the more important. Out of these 15 points, is there anything that you want to ask me again? One good suggestion has been made here. Avoid this is to inform you that. Generally, we begin our notices like this.
So instead of doing this, instead of using this statement, you can start it like this. So there are 4 suggestions given here. If you feel, you can note down. Once you've started it like this, the second part, which is the major part of your notice, that gives all the details, that tells all the details or gives complete information about what notice is. So it includes date of the event, time of the event, venue of the event. Then if there is something else needed, what are the things that are required, what are the things that are to be brought, what are the things that are to be kept in mind. If there is some protocol, you can mention all that here in this part. Then comes the closing. And when you close it, you can say, for further details, contact, or for more details, contact undersigned, or feel free to contact undersigned, something like that. So these are some statements with which you can close your notice. So these points should be used, these statements should be used, and if you feel like, let them be noted down. That's it. What is important is कि आप जब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हो, वो आप पहले लिखोगे. यहाँ आपको कई रेफरेंस बुक में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाता है कि वर्ड नोटिस इज रिटन फर्स्ट एंड देन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. समवेयर यू विल फाइंड नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड देन वर्ड नोटिस. आपको क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे लिखना है, दैट्स इट. उसके बाद आपको नोटिस वर्ड लिखना है, जरूर लिखना है, और वो भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, नहीं तो आपका आधा नंबर उसी में कट जाता है. ठीक है. बी केयरफुल इन राइटिंग वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है. उसके बाद आप नीचे जो भी हेडिंग आपको सुटेबल लगती है, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आप एक हेडिंग क्रिएट करेंगे और वहां पे लिख देंगे. ठीक है. बाकी ये हमने बात कर ही ली है. जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाए, आप पहले से उसको इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे कि आपको ये ध्यान रहे कि लास्ट में आपको इसे एक बॉक्स में क्लोज करना है. तो द लेंथ ऑफ द लाइंस ऑफ योर नोटिस शुड बी इक्वल. आप पहले से बॉक्स बना दोगे, यू डोंट नो कि हाउ लेंथी, हाउ लॉन्ग इज योर नोटिस गोइंग टू बी, तो आप पहले से बॉक्स ड्रॉ नहीं कर सकते. यस, यू कैन डू वन थिंग, you can draw top line and side lines, okay, and then start writing. So whatever is the length of your notice, accordingly you can increase the length of the side lines and then close it, then draw the bottom line. ये आप कर सकते हो, या कोई लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, आप पूरा लिख लो ऑफ द इक्वल लेंथ और फिर लास्ट में बॉक्स ड्रॉ कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. बट इट हैज टू बी केप्ट इन अ बॉक्स. वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, इट शुडंट बी एक्सीडेड. Try this out. Would you like to try it now? Yes बोलो. नहीं भी बोलोगे तो भी मैं करवाऊंगा. Yes sir. Yes sir. Yes आपको sir. क्या नहीं लिखना ही है, आप यस नहीं भी बोलोगे तो भी अभी लिखना है. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. पोस्टर के टिप्स हम बाद में पढ़ेंगे. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. डू इट राइट नाउ. Now it is 3:17. You will start writing at 3:18 and I am giving you a time of 5 minutes. That means 3:23. 3:23 पे मैं किसी एक बच्चे से बोलूंगा कि अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ कि तुमने क्या लिखा है. उसको फिर पूरी क्लास डिस्कस करेगी. लिखना सबको है. आई विल आस्क एनीबॉडी.
Sir, sir, will you please Yes. show the question again? Okay. It's 322. She has completed. When I gave this Sir, task, completed. the strength was 30. Now there are 25. Okay. Have you all completed? Or is there anyone who has not yet completed?
Is there anyone who has not yet completed? Sir, I This have not means yet completed. Sir, I have not completed. Ushi has not completed, and Sir, I have not completed. I couldn't see who is speaking. Sir, I have also not completed. Sir, me too. Sir, me too. Beta, So me too. now there are so many me too's. See, if you are taking 8 minutes to write a notice, you are taking too much. You are taking too much. Okay? For writing a notice of 3 marks of 50 words, you should not need more than 5-6 minutes. Okay? I'll wait for 1 more minute. ट्वेंटी टू हो गए 30 थे जब मैंने ये दिया था काम 8 बच्चे तो असाइनमेंट छोटा सा असाइनमेंट देख के भाग गए क्या 8 students have left I can very easily find out who are those 8 students let me take a screenshot of the remaining names then I'll check from the attendance when I started done I'm talking to those who said they have not yet completed Yes, sir. Yes, sir. Neha completed Yes, sir. Khushi completed Yes, sir. Samriddhi sir. completed Rohit completed there were few more who were saying they have not completed Yes, sir. done okay fine so who would like to share what is the date today Sir, 20th. so whose roll number is 20 in 11th A you got your roll numbers at the time of half yearly whose number is 20 probably the student is not in the class अच्छा 20 in 11th B बता दो लिस्ट तो मेरे पास भी है आपकी मार्क्स स्लिप तो हम लोगों ने ही बनाई है ना बेटा हमारे पास भी है चलो ठीक है 19 हु इज 19 सारे लोग भूल गए कि चलो मैं ऐसे नहीं पूछता हूँ दूसरे तरीके से पूछता हूँ ठीक है 11th ए में 1 कौन है ये नहीं बोलना है कि मैं आप बता सकते हो कि वो अरमान. Sir, हाँ Arman. ऐसे हाँ ऐसे आप दूसरे का भी नाम बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें अरमान ठीक है इसके बाद 2 कौन होगा Barbie. Barbie. 3 Hmm. 3 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
भौमिक। भौमिक खुद नहीं बोल रहा है. He is there in the class. Bhaumik, unmute yourself. Now he will tell ki his mic is not working and his camera is also not working. Bhaumik, either write something in the chat section so that I can find out you are there in the class, or I'll be forced to remove you. Bhaumik. Chalo. Who is 4 after Bhaumik? देवांश। I've never seen Devansh in your class. Does he attend other classes? No, Devansh sir. was Rathi, that Jim Carrey. वही है ना देवांश? Yes, sir. He doesn't attend other classes also. सर उसको बीच में शायद से अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टाइफाइड वगैरह कुछ डिजीज हो गई थी उसको शायद, इसलिए। ना मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं है ऑनलाइन क्लास में. मैंने कभी नहीं देखा उसे, एज फार एज आई रिमेम्बर. ठीक है, फिर उसके बाद सर देवांशी। देयर इज समबडी हु इज टेलिंग हर ओन नेम. अच्छा, बारबी आल्सो टोल्ड हर ओन नेम. देन आफ्टर देवांशी, दिशा. दिशा। ओके, आफ्टर दिशा. दिशा, व्हाट्स योर नंबर? 7। 7. 8. धनंजय। 9. Be quick. चलो ठीक है. सर गर्वित। 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 दिशा, यस सर। have you written it up? यस सर। Can you share your screen? यस सर। Show it to us. Sir, is it visible? Yes, notebook is visible. Letters are visible? Let me ask other children because they only have to make a comment on that. Rumisha, Yes, sir. we can do one thing. Either turn your layout on Spotlight so that the speaker will be visible on entire screen, or you can pin Disha for some time so that she will be visible on full screen to everyone. You have two options. Disha, unmute yourself and speak something so that you will come on the screen. Okay, sir. है ना? Now, beta, you all can pin her on your screen, and I will stop speaking. Otherwise, I will be on the screen all the time. Now, can you all read this? No, sir.
Perhaps nobody can. अच्छा ठीक है. Disha, Yes, sir. do one thing. Yes, sir. Keep your notebook straight बेटा. एक मिनट इसको सीधा कर पूरा. 1 minute. Vertical, हाँ. Like that. Okay. A little backwards, little towards you. Towards you. Now hold it. बस hold it. Let us see the focus sets. ठीक है, no problem. She will read the words. She will read the words and you can all tell how much of that is okay. But before she reads, you just see the format. Is it okay or do you want to say something for it? Disha, move it a little forward, just a millimeter forward. Is it okay? It is okay, but not okay for your camera. The focus of your camera is not very appropriate. On laptop. ठीक है. Sir, No can I problem. share my screen? No, wait. I have written it in Word. Just a minute, beta. Just a minute. I would like to go back to Disha first. Disha, say something because you are not on the screen. When you speak, you will be. I am constantly speaking, so I will be on screen again and again. But I would like to ask everyone, can you see the way she has written? Is it appropriate or would you suggest some modification, some improvement in the format she has used? Or is it correct? On top, she has written the name of organization. Sir, I have a doubt. Sir, in the starting, it is written ST. So I have to write S and T both in capital, or may I write T in small? Actually, ST is for Saint. Is it Yes, the name sir. of school? Yes, sir. So that ST, S should be capital, but T should be small. Okay, sir. Okay. So this is name of the school on top. Yes, Then sir. what have you written on left? Date. Yes, sir. And where is the word notice after date? Yes, sir, in this middle. Okay. Would somebody like to say something here? Or you are happy with this format? Sir? सर डेट से पहले नोटिस आएगा. Yes, sir. First notice, then date. Yes, sir. Okay. Disha got it? Yes, sir. Okay. Then she has written the heading. What is the heading, beta? Can you read it? Sir, can I just... Turn it. Now we don't want to see. Just read it. Funds for charity. Now the matter, the content of your notice. The school is organizing a fete to collect funds for charity. School students can put up the stalls. Date 25 October 2020. Timing 11 a.m. Last date for submission 22 October 2020. Those who are interested can give their names to their class teachers before the due date. Disha Saraswat, Head Girl, St. John's Public School. Any comment? Any comment? सर स्टॉल्स किस चीज के होंगे वो इंफॉर्मेशन? सर स्टॉल्स किस चीज के होने चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन? स्टॉल्स किस चीज की होनी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा. सर नहीं तो कोई भी पर्टिकुलर. आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना है कि ये नहीं होना चाहिए, है ना? यस सर. तो आप वहां पे बता सकते हो, है ना, कि स्टॉल्स फॉर ईटेबल्स, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो स्टॉल्स फॉर वेजिटेरियन ईटेबल्स ओनली. यू कैन से लाइक दैट, है ना. स्टॉल्स ऑफ गेम्स, है ना, नो कार्ड गेम्स अलाउड, नो डार्ट गेम्स अलाउड,
है ना, because in dart games also there is a danger of somebody getting hurt. तो आप इस तरीके का कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज यू कांट गिव अ लिस्ट, इट विल बी टू लेंथी, है ना, you will exceed the word limit. अच्छा, other than this anything else? Sir, when you सर get कहाँ पे फेट कंडक्ट किया One by one, one by one, one by one. Sir, instead of instruction, we can write that students can contact the following organization or class teachers for more information हाँ, about. for further details, for further information, Yes, for sir. more details, है ना, ठीक है. अच्छा, और क्या हो सकता था इसके अंदर? एक इसने बोला लास्ट डेट ऑफ सबमिशन. Somewhere she said last date of submission. Submission of what? Sir, their names, those who are interested. So when you are saying submission, you should say submission of what? Names. ठीक है. Okay, sir. Fine. हाँ, there was one more thing. Somewhere you said stalls by students. Yes. है ना? So because it is a clear instruction that No, no, sir. students are allowed. Only students are allowed. है ना? There was an instruction like this in the question. Sir, I have written school students can put up the stalls. Yes. This. तो है ना, school students can put up the stalls. आपको उसमें only word भी ऐड करना पड़ेगा कहीं. Okay, sir. In the beginning of the sentence. हाँ, only school students can put up the stalls because ये question में specify किया हुआ है कि no other person is allowed. है ना, only school students Yes, are allowed. ठीक है, तो just specify that for the clarity of instruction. Okay, sir. है ना, instruction should be clear. चलो, there was one more student, otherwise it is okay. One more student wanted to share. Somebody, I forgot the name. Who was that? यस सर. Yes, beta, be quick. It is already 3:43. Share it. Shravani, okay. सर is my screen visible? Yes, screen is visible. Notice is not yet shared. Good. Any comment by anyone? सर डेट फॉर्मेट ये वाला चलता है नोटिस में? Yes, you can write it like this. In letters, you need to write that way. 20th. What is this? 10 October 2020, like that. But for notice, you can write it like this. A fate for collecting funds for charity. ठीक है. No comments? At least you can say no. No, sir. Okay. Beta, one error computer has found. When you write November, N should be capital. There should be a dot full stop after V. है ना? Yes sir. Or write
full spelling of November. Otherwise, write capital NOV and then dot. है ना? Now see, how have you written? Our school is organizing a fete and it is on 5th November 2020 on football playground. ठीक है? Now see, our school is organizing a fete on 5th of November अगर आप लिख देते and it is on, पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? No, sir. And it is, इसकी जरूरत नहीं है वहां पर, है ना? इन अ कंटिन्यूएशन, हाँ अब देखो, हाँ अभी रीड करके देखो इसको, क्या अभी गलत लग रहा है आपको? No, no, sir, गलत नहीं लग रहा. है ना? अच्छा, अब फुटबॉल प्लेग्राउंड को सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड कर दो. ठीक है? The students interested to put stall. अच्छा, for the fundraisers. For the fundraisers आएगा या for fundraising आएगा? For fundraising. हाँ, तो द भी हटा दो आप, है ना? है ना? टू पुट स्टॉल की जगह टू पुट अप स्टॉल कर दो, है ना? और यहाँ स्टॉल्स करो, इट शुड बी प्लूरल. टू पुट अप स्टॉल्स फॉर फंड रेजिंग इन द फेट कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स. रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स मतलब अपने अपने क्लास टीचर्स, है ना? रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स इट शुड बी. और कैन को लिखो आप मे, है ना? आपने लिखा है ना, कैन गिव देयर नेम्स, मे गिव देयर Yes, sir. नेम्स, मे गिव देयर नेम्स, नेम्स. नेम्स बेटा, नेम्स, आपने नेम लिखा हुआ है, देयर नेम्स, है ना? टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, वहां पे भी टीचर्स आएगा, प्लूरल रहेगा वो भी. अब क्योंकि आपने क्लास टीचर के बाद में फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो द क्लासेस ऑफ 9 to 12 आर अलाउड. ये द का टी कैपिटल होना चाहिए. दूसरी बात ये, ऑफ 9th to 12th, इसको आप आइदर 9th के ऊपर टीएच लिखो, 12th के ऊपर टीएच लिखो, है ना, सुपरस्क्राइब करके, या फिर रोमन में लिखो आप 9th to 12th, या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो फिर आपको उसके ऊपर टीएच लिखना है ना? और ये स्टेटमेंट आप पढ़ के देखो, आपको खुद ही थोड़ा गड़बड़ लगेगा. द क्लासेस ऑफ 9th to 12th, द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th, या द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th क्लासेस, या फिर, है ना, 9th to 12th क्लासेस आर ओनली अलाउड टू पुट ना. आप स्टूडेंट्स कर दो यहाँ पे, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th, ऐसे लिख लोगे आप तो वो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा. बाद में कर लेना, है ना. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th आर ओनली अलाउड टू पुट अप स्टॉल्स. द लास्ट डेट फॉर गिविंग नेम्स इज दिस. द स्टॉल शुड बी ऑफ games, food. For further queries, contact Mr. Mishra sir. ठीक है? Okay. Fine, beta. Good. Stop sharing. We are already late. Rest we shall discuss in the next class. Sai Ram, everyone. Sairam sir, thank you sir. Thank you, sir. Sairam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sai Ram. Thank you, sir.
देशना बेटा छुट्टी हो गई है। देशना, देशना जैन।